We are on our way to Gangotri Temple. Today is an auspicious day. It's Akshay Tritiya. This is when Gangotri Temple opens after a hiatus of 6 months. This is our day 2 in Harsil, a quaint little village in Uttarakhand near Gangotri. We got ready and quickly had our breakfast before starting for the Gangotri Temple. Harsil is a very small village en route Gangotri, and mostly people just pass through Harsil on their way to Gangotri or when they are on Char Dhaam Yatra. We are staying at Harsil. It's a very beautiful place. The Gangotri Temple is located about 30 kilometers from Harsil, and it takes about 40 to 45 minutes to drive here from our resort. We had a fun road trip all the way from Delhi and arrived in Harsil yesterday. If you want to see our exciting journey, you can check our previous video in the Harsil series. Today we are heading to Gangotri Temple in a bolero organized by the hotel. We don't have to worry about driving for the next couple of days because our awesome driver Satyendra ji will be with us. गंगा डोली को गंगोत्री तक पहुंचाने का एक फ़िक्स टाइम होता है, एक मुहूर्त होता है. आज शायद 12:45 है. उसी हिसाब से यहाँ से शुरुआत करते हैं और डोली को लेकर जाते हैं. लगभग 2-2.25 घंटे का टाइम गंगोत्री तक पहुंचने का लगता है. The road from Harsil to Gangotri is absolutely breathtaking. We are surrounded by magnificent snow-covered mountains, a beautiful blue sky, and tall green trees lining both sides of the road. It's the kind of scenery that city folks like us often dream of and happily drive for hours just to experience for a few days. It truly feels like stepping into a magical world. After this short drive, we have reached Gangotri Temple. Our driver dropped us off at the parking area, and from here we'll take a little walk to the temple. दिल्ली से गंगोत्री का रास्ता ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर है. और अगर आप मोस्ट फेमस रूट चाहिए दिल्ली से गंगोत्री आने के लिए तो दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश और चंबा, उत्तरकाशी, गंगोत्री. बेस्ट तरीका भी अगर दिल्ली से आप गंगोत्री आ रहे हैं तो बाय रोड ही है. चाहे सेल्फ ड्रिवन कार में आइए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी ड्राइविंग के बारे में, या आप टैक्सी करके आ सकते हैं. अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ ऋषिकेश. रेलवे स्टेशन से 7.5 घंटे लगते हैं गंगोत्री आने में, जो रास्ता आप टैक्सी से कवर कर सकते हैं. Other option that you can consider is like you can fly down to Jolly Grant Airport, and from there you can take a taxi or a shared transport, and that also will take you about 8.5 hours. We have almost reached Gangotri Temple. We were dropped at the entry, and it's about 500 meters from the entry point. The excitement all around us is palpable. We are yet to see massive crowds, thankfully. Today is Akshay Tritiya, commencement of the Char Dhaam Yatra. Probably the most important day here because this is when this temple reopens after 6 months. So the Char Dhams, the 4 religious spots are Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. So today is opening of the first spot, Gangotri. And to mark the occasion, we are told the Chief Minister is also going to visit this temple. I don't know if that's good news for us, but so far so good. It might get very crowded because of that. और अगले कुछ दिनों में बाकी यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ भी खुल जाएंगे और चार धाम यात्रा वुड बी इन इट्स फुल स्विंग. उसी के साथ बीच में समर वेकेशन भी है, तो बहुत सारे लोग टूरिस्टी रीज़न से और बहुत सारे लोग रिलीजियस रीज़न से इस जोन में आने वाले हैं. और जैसे कि सभी भी हिंदू तीर्थ स्थानों पे होता है, द अप्रोच टूवर्ड्स टेम्पल इज़ फुल ऑफ दी स्मॉल शॉप्स जहाँ पे आपको सुवेनियर्स और खाली बॉटल्स, गंगा जल ले जाने के लिए, पूजा का बाकी सामान और छोटे छोटे ढाबे, दोनों तरफ छोटे छोटे ढाबे हैं जहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह कर सकते हैं. We have arrived at the entrance gate of the temple, and the atmosphere here is filled with divinity.
the sound of temple bells, the sight of vibrant marigold flowers, and the presence of sages all around create a truly sacred ambience. We can also spot security personnel stationed at various corners of the temple, ensuring the safety and orderliness of this place. Amidst the beating of drums, joyous chants, and a festive atmosphere, the Ganga Doli, or the palanquin carrying the deity, has finally reached Gangotri Dhaam. That's the Gangotri Mandir, one of the famous pilgrimage sites in northern India. A lot of locals and tourists have gathered around the temple to witness the opening of its doors known as Kapat. हम फाइनली गंगोत्री धाम पहुंच गए और मेरे पीछे है द फेमस गंगोत्री टेम्पल और उसी के बाहर है गंगा डोली देवी की पालकी जिसे अभी पूजा और आरती के बाद एक निश्चित टाइम पे अंदर ले जाया जाएगा और मंदिर में स्थापित किया जाएगा. At Gangotri, it's like divinity everywhere. We smell divinity, we hear divinity. We haven't tasted it yet, but maybe in that process we are going to do it. But you know what is most humbling? And it's for me at this point is behind us are the mighty Himalayas. We just saw the Ganga flowing very slowly, very gracefully on these shingles and rocks just beside this temple. So I think that is the best Ganga temple that we can think of. In the background, you can hear the Garhwal Rifles Army Band playing to commemorate the Ganga temple procession. Now is the auspicious time to place the deity of goddess Ganga inside the temple shrine. People are chanting and praising the goddess with great enthusiasm. Unfortunately, we are not allowed inside the temple yet, and cameras are also prohibited inside the sanctum sanctorum. However, we can show you the excitement from outside. There are helicopters flying above, adding to the grandeur of the ceremony. Visiting the Gangotri Temple has always been a cherished dream, and we are overjoyed that we could fulfill it during this trip to Harsil. We are on this trip courtesy invite of Prakriti Resort at Harsil. So it was just this opportune day when Gangotri was reopening for this year, and we really appreciate this gesture on part of Prakriti for arranging this trip for us. मेन गंगा डोली के अलावा यहाँ पे बहुत सारे आसपास के गांवों से छोटे छोटे ग्रुप्स आए हुए हैं जो अपनी देवी को डोली में लेके आए हुए हैं और उनकी भी छोटी छोटी पूजा यहाँ पर चल रही है along with the main procession. और कुछ एक तो इतने बड़े ग्रुप्स हैं जिन्हें देख के हमें लगा कि शायद वही मेन गंगा डोली है. नमस्कार, मेरा नाम एस रामकृष्णा है. हम लोग उत्तरकाशी से हैं और हमारे जो गांव के देवता हैं, नाल्ड जो गांव है, वो देवता पैदल आई है. यहाँ स्नान होगा, स्नान होने के बाद फिर पैदल वो गांव पर जाएंगे. तो हमको खुशी होगी कि आप वो देवता का दर्शन करने के आइए. ये आइए, गांव के लोग हैं. ये देवता है हमारे नाग देवता, नाल्ड के हैं. वो वहाँ से 3 दिन सफ़र करके, पैदल सफ़र करके यहाँ आए हैं. आज स्नान हुआ है. गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल. यहाँ से थोड़ी सी गंगा अपने साथ लेके जा रहे हैं, बॉटल्स में भी और अपनी यादों में भी और अपने कैमराज में भी. और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम सबका एंड गंगा में ही मिलके होता है. हमारा अंत, हमारी अस्थियाँ, हमारी राख जो है एंड में गंगा में ही मिल जाती है. तो बेसिकली ये एक हम जिस माँ से निकल के आए हैं उसी माँ के साथ वापस चले जाते हैं. तो ये भी एक सिग्निफिकेंस है जिसके लिए गंगा और गंगोत्री बहुत ज़्यादा फेमस है और इसकी रिलीजियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है हिंदू माइथोलॉजी में. People, pilgrims, devotees, everybody wants to make the most of it, and everybody is taking the dip. So irrespective of age, gender, kids, middle-aged people, young people, old people, everybody who can walk into the water, they're walking into the water. And if they can't walk into the water is being brought to them in jars, in jugs, and then they are being they're showering in that, sitting on the steps on the bank. So that's also another way to take a dip, we realized. So ultimately, where there's a will, there's a way. So that's what we thought.
So the water here is so clear. It's like a big stream at this point, and you can pretty much see the base of this stream. And this is how it should be. But unfortunately, when we go down to Banaras and then later to Bengal, and when it finally joins the Bay of Bengal, it's a very different color. Maybe it's like life. When life starts, it's pure, it's pristine. It's not complicated, but as life goes on, we need to learn to deal with things. Our life becomes like murkier, difficult, shades of grey. So this is what I thought. This is so reflective of life. It was almost noon and we were feeling hungry. We decided to have lunch at the dhaba near the temple. The food was simple, satisfying and affordable, just what we needed. गंगोत्री दर्शन के बाद वापस जाते हुए लगभग 4 मिनट की दूरी पे सूर्य कुंड और गौरी कुंड है। दोनों ही जगहें बड़ी फेमस हैं और बिल्कुल पास है। इस समय हम सूर्य कुंड पर हैं। तो यहाँ की स्टोरी ये है कि पार्वती देवी यहाँ पर नहाने के बाद सूर्य देवता की पूजा करती थी, इसलिए ये सूर्य कुंड फेमस है। भागीरथी का पानी यहाँ पर आके एक पूल की तरह इकट्ठा हो गया, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। सूर्य कुंड के बाद आगे थोड़ा सा ढलान पे गौरी कुंड है। अभी हम गौरी कुंड जा रहे हैं। कल रात को यहाँ बर्फ़ गिरी तो उसके कुछ पैचेस में अभी तक भी बर्फ़ दिख रही है हमें। यहाँ पे कुछ सूर्य कुंड में सीढ़ियों पे बर्फ़ थी और अभी गौरी कुंड के रास्ते में भी हमें दोनों तरफ बर्फ़ नज़र आ रही है। अप्रैल, दिस इज़ ऑलमोस्ट अप्रैल एंड में यहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है। और दैट इज़ इनफ फॉर अस दिल्ली वालास टू गेट एक्साइटेड। एवरीथिंग एल्स इज़ अ बोनस। The chief thing that Delhi Fundus probably has done to me in person is connect me with my stories of my childhood. The story of Gauri Kund is one of those. So my grandmother told me the story about Gauri Kund, and it's not very long. It's just that Gauri, the other version of Parvati, so she was enamored by Shiva, and she was steadfast that she would only get married to Lord Shiva. So she started a penance to impress Lord Shiva. And she was an ascetic. She gave up food, she gave up water, she became very, very thin. So initially she started with having leaves of trees, and then later she gave up that also, so she became just skin and bones. That is when she's called Aparna. Aparna is somebody who doesn't even consume leaves. And then after a while Shiva became impressed with her penance, and then he came, gave her darshan, and then he agreed to become her husband. So apparently Gauri Kund is where Gauri did her penance. So that is a legend associated with this spot. दूसरी कहानी जो गौरी कुंड के साथ जुड़ी हुई है, जो कि बहुत ही इमेंसली पॉपुलर स्टोरी है। यहीं पर देवी पार्वती स्नान करने से पहले अपने शरीर की मैल से उन्होंने एक बच्चे को रूप दिया, गणेशा, जिसका काम था गार्ड करना जब तक वो स्नान कर रही हैं, ताकि कोई अंदर ना आने पाए। शिवजी जब आए और उन्होंने अंदर आने की कोशिश करी, गणेशा ने उनको अंदर आने से मना करा। गणेश के लिए इतना ही काफ़ी था कि उनकी माँ का वचन उन्हें रखना है और किसी को अंदर नहीं आने देना। उन्होंने अंदर नहीं आने दिया और क्रोधित होकर शिवा ने उनकी गर्दन काट दी। ये जानकर पार्वती इतना रोई और उन्होंने कहा कि मुझे तो गणेश को वापस ला के दीजिए। भगवान शिव ने ये कहा कि जो भी पहला जीव मिले उसकी गर्दन ले आओ, जो मैं गणेश के सिर पे लगा दूंगा। तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी मिला, जिसका सिर काट के उन्होंने गणेश के सिर पे लगा दिया। तो यही वो जगह है, यहाँ पर ही ये घटना घटी। इस वजह से भी गौरी कुंड का बहुत धार्मिक महत्व है। हमारी अपने सभी देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आएँ या किसी भी जगह पर जाएं, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। और हमने भी स्टील की अपनी बोतल ली है। स्टील वाटर बॉटल्स, वन टाइम वाली डिस्पोजेबल बॉटल्स जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि आप देख रहे हो गंगा भी वहाँ से हमारे शहरों तक ही आ रही है, तो उसके साथ ये प्लास्टिक भी आने वाला है हमारे पास ही। Gangotri is a place of incredible natural beauty and holds immense religious significance. The divine atmosphere and unique vibes make it a truly special destination to experience incredible India. In the next part from this series, we are adding an adventure to our trip and going for Gartang Gully trekking. If you like this video, please let us know by giving it a thumbs up. Please subscribe to Delhi Fundus and do press the bell icon to be notified of our new videos. Thank you.